ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर आम देखिले ए लैंग्वेज प्रोसेसर रे कौन कौन सब टाइप अच्छी ता भीतर प्रथम टाइप है कंपाइलर कंपाइलर कौन करिवो आमे कंप्यूटर को कौन सी इनफॉरमेशन दबा को हेले आमे हमर जो लैंग्वेज गुडा को कंप्यूटर बुझी पारे नहीं कंप्यूटर केवल बुझिवो कोडा ना 0 और 1 फॉर्मेट को बुझे तेणु कंप्यूटर को 0 और 1 फॉर्मेट रे इंस्ट्रक्शन दबा को हेले हमको किसी हाई लेवल लैंग्वेज रो हेल्प नबा को पड़िवो हाई लेवल लैंग्वेज ता ही 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट हेई परिवो बुझिला से जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन हेई परिवो ना सी सी प्लस प्लस जावा एगुड़ा सब हाई लेवल लैंग्वेज रे गणा जाए तेणु द लैंग्वेज प्रोसेसर अलाउ द कंप्यूटर टू रन एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बाय रीडिंग कंप्लीट सोर्स कोड आमे जो कोडिंग ता लिखिबा ताकू कहआ जाए सोर्स कोड बोली कहआ जीवो जोरा कि जावा पाइथन सी शार्प ए सब लैंग्वेज रे लिखि परिबा से कोन करिवो कंप्लीटली ताको रीड करिवो व्हिच इज रिटन हाई लेवल लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन देन इंटरप्रेट दिस कोड and because it is translated into the machine language interprets माने ताको से कन्वर्ट करियो माने गोटे थाए इंटरप्रेटर थाए आ गोटे होता है कंपाइलर थाए आ परे बोते इंटरप्रेटर अछि हां इंटरप्रेटर अछि तो कंपाइलर कोन करिवो सब जाक सोर्स कोड को से एकाठी करिवो ताको ट्रांसलेट करिवो तापर हमको आउटपुट देखिबो इंटरप्रेट माने ताको कन्वर्ट करिवो को फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो तो जदि हमें पिक्चराइजेशन देखिबा प्रथम है सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज अच्छी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन हो पारिबो ना सी सी प्लस प्लस जावा ये सब लैंग्वेज हो पारिबो एक सेकंड ये जो सोर्स को हाई लेवल लैंग्वेज अच्छी ये रहइबो कोन सी लैंग्वेज रहइबो सी प्लस प्लस लैंग्वेज रहइबो जावा एगुड़ा सब हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को से कन्वर्ट करिवो का को मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवो मशीन कोड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द 0 एंड 1 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो तो ये जो 0 और 1 को हमें को बीट बोली रिप्रेजेंटेशन करू 0 हला गोटे बीट 1 हला गोटे बीट बुझिला देखो एटा सब लोग तमर होइला आश्रम लोग काम जेतरे घरे देखिबो डालना नहीं डिफरेंट क्वालिटी प्रैक्टिकल पर अलग अलग जगह रखते ता पर हम बोले इकट्ठे हो जाते ताली बजा लाइन बोले सारा बोले काटे आश्रम लोग होती से
assembler सेमती काम करिवो जोटा कि कोन करिवो द assembler convert the program written in assembly language into machine code. It is also referred to as the assembler or assembler language by some users. The source program has assembly language instruction which is an input of the assembler. The assembler translates this source code into a code that is understandable. आ अर्थ होची कोन ना आमे पढ़ले कोन ना कंप्यूटर केवल 0 और 1 फॉर्मेट को बुझिवो आमे हाई लेवल लैंग्वेज रे देले कंप्यूटर ताको कंपाइलिंग कला कंपाइलिंग करके ताको कादर कन्वर्ट कला 0 और 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट कला एबे 0 1 फॉर्मेट कंप्यूटर बुझी परला एबे मु कोन करबी ना मोर जो कंप्यूटर अछि आदरे मु विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रखी छी आ जने कहला मु मैक ओएस रखी छी आ जने कहला मु लिनक्स रखी छी अर्थ होची पीएम मोदी गले यूनाइटेड स्टेट रे जो भाषणबाजी कले हिंदी रे कले आउ जो लोक माने सब अछंते सी सब इंग्लिश रे ताको कन्वर्सन कले माने 0 1 फॉर्मेट रे कन्वर्सन हे गला इंग्लिश रे जने स्पीच देले सब पंडित माने भी अछंती अफगानिस्तान जने जदी आसीबो सी होची कोन माने सबटा बेस्ट बड़ पंडित लोक अछंती त सी कोन करिवे हला कारण से इंग्लिश तांकर नॉलेज नै धर श्रीलंका रे गोटे किछि लोक गले सी इंग्लिश रे बुझी पारलेनी सी कोन करी तमिल भाषा बुझिवे ओके तो किंतु भल लीडर तो लीडर माने आमे तांकर इंग्लिश जानिबा भी दरकार नै से तांकर लोकल लैंग्वेज लागे जानिबे तो एबे जो सिंहली भाषा रे कन्वर्ट करिवा अफगानिस्तान रे तांकर अफगानी भाषा रे कन्वर्ट करिवा रशियन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करिवा एटा केमती होबो असेंबलर से रोल करिवो तो 0 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट होला तो प्रत्येक लोक बा प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के बुझिवो ना असेंबलर ताको आज इनपुट हिसाब रे नबो आउ से एडी देला देखो इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द कोड दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर कंप्यूटर जो भाषा रे बुझी परिवो इट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड एटा कुआ जीवो ऑब्जेक्ट कोड बोली कुआ जाय बुझी पाले कि नै असेंबलर काम तनु प्रत्येक जो मशीन रे आर असेंबलर गुडा को सब अलग अलग है कि रहिबो बुझला कंपाइलर कोन कला ट्रांसलेट कला असेंबलर कोन करिवो ताको सब डिवाइस पई ताको अलग अलग तार ऑब्जेक्ट कोड बनेबो तो जे जो भाषा विंडो पई ऑब्जेक्ट कोड अलग बनेला लिनक्स पई अलग बनेबो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पई अलग बनेबो बुझि पाइले ना बुझिरानी लेखा असेंबलर ए जो दीटा जिंस अछि एटा पाखा पाखी सेम भले जणा पड़े कंपाइलर और इंटरप्रेटर माने तांकर सेम काम बा सेम भले एका भले जणा पड़े किंतु इंटरप्रेटर कोन करे जो कोडिंग गुडा को थिबो ताको से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करे ओके तो आ अर्थटा होची कोन ना जते बेले मु प्रोग्राम लिखिली सपोज मोर 100 टा लाइन अछि 1 2 3 एमती अप टू करी की 99 100 लाइन पर्यंत गला तो एठी हमें कोन देखिबा जते बेले कंपाइलर रे मु प्रोग्राम टा लिखिची मोर 99 नंबर रे एरर आसिला कौन से प्रकार प्रॉब्लम आसला मु प्रॉब्लम सॉल्व कला पर 99 नो मु 100 स्टेप को जाई परिबे कारण जते सब मु कंपाइलेशन करी के आसुची कन्वर्ट करी के आसिले से गोटे मेमोरी रे स्टोर होला समय वाला से बुझो निद कम मारू हां ये अटेंटिव द मतलब पूरा ऊपर ऊपर जियो सेकेंड ईयर ला एरो सब टेक्निकल जिंस उडा बतौ तो देखो 99 नंबर रे मोर जते बेले एरर आसुची जते बेले मु ताको सॉल्व कली से ऑटोमेटिक 100 लाइन को पळेबो कारण मु जते कि सब प्रोग्राम उडा को कन्वर्ट कली से सब स्टोर होला कोठी ना गोटे मेमोरी रे स्टोर होला किंतु इंटरप्रेटर रे कोन हुए ना से 1 बाय 1 लाइन चेक करिवो जेन कोविड जते हेतरा से समस्त को टेस्टिंग कराव घर घर बोली टेस्टिंग कले तन जते बेले गोटाय लोकर किछि भारला ताले टोटल लोकन को से एरिया को क्वारंटाइन कर दोतले से गोटा लोक से लोक टेकी नहीं होतले आ पूरा 7 8 दिन जाय से एरिया रे बंद तापर सब लोकन को एकदा टेस्टिंग होतला तो एई भली कोन हला ना जतले मु इंटरप्रेटर यूज करबी जदी मोर 99 नंबर रे एरर आसिला मु ताको सॉल्व कली से आ 100 लाइन को जीवनी से अगेन पुनी एक नंबर रो स्टार्ट हो तो कोन हला प्रॉब्लम ला मु ऑलरेडी से काम उडा कर देची जदी गोटे जगह एरर आसिला तो सेटा को सॉल्व करी मु नेक्स्ट को जीवी ताले मु इंटरप्रेटर यदि यूज करूची ताले एटा होची टाइम कंज्यूमिंग किंतु देखिबा को गले जावा होची गोटे प्रोग्राम जोटा कि बोथ कंपाइलर आ इंटरप्रेटर से दीटा को यूज करू कारण इंटरप्रेटर 1 बाय 1 चेक कला कंपाइलर कोन कला जोटा को जे सर्विलेंस माने तमे समस्त बस तमे तो मु जण को गोटे टेस्ट करी
ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିड ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କଲେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବ, ଯାହାର ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବୋଥ କମ୍ପାଇଲର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ଜାଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଆଉ କମ୍ପାଇଲେସନରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟର ହଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ଲାइन बाय लाइन चेक करके दब गोटे लाइन प्रोग्राम कल तुमको एग्जीक्यूशन करके शो कला। तो इंटरप्रिटर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द टैक्स टू परफॉर्म द प्रोग्राम रिटन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मेनी हाई लेवल लैंग्वेज। आम प्रोग्राम लिखा डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज यूज करवा सी सी प्लस प्लस जावा ये सब यूज हम and that are directly executed by the interpreter without previously converting them an object code or machine code, which is done line by line statement. When the interpreter is translating the source code, आमे जो कोड गुडा का लिखिले इंटरप्रेटर कोन करबा ताको ट्रांसलेट करबा। जेतरा से ट्रांसलेट करूची इट डिस्प्ले एन एरर मेसेज। यदि कोनोसी प्रकार एरर अछि एरर मेसेज करबा। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट एंड टर्मिनेट द स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रांसलेटिंग प्रोसेस, सेडी संगे संगे ट्रांसलेटिंग प्रोसेस बा कन्वर्जन को स्टॉप कर दबो। When the interpreter remove the error on the first line, then it move to the next line. Interpreter जेतले एरर ता गोटे गला एरर टा को सॉल्व कला परे से नेक्स्ट लाइन को जीवो। ओके, तनो ए प्रोसेस टा कोन होय ना बिगिनिंग रो पुनी एरर हैला पुनी फर्स्ट लाइन रो स्टार्ट हो पुनी जीवो नेक्स्ट लाइन को जीवो। किंतु कंपाइलर कोन होबो ना ऑलरेडी से कंपाइल्ड है कि गोटे जगह रे था माने सब बेले कोन होबो ना कंपाइलर सोर्स कोड को जीवोनी थरे सोर्स कोड लोड हैला मेमोरी रे सेउटो से ट्रांसलेट कला। किंतु इंटरप्रेटर कोन करिवो गोटे लाइन को ट्रांसलेट करिवो अगेन जीवो। अर्थ होची मु जते बेले मासिकिया दरमा जो मासिकिया सौदा किनिबी हला ताले मु एका थरके गली गोटे पेटी रे नेकी घर पय पळै आसेले। किंतु मु कहिबी मु मासिकिया सौदा घर को आनिबिनी मोर जते बेले जोटा सरीबो सेटा आनिबी। डाली सरला डाली आनिबी, लुण सरला लुण आनिबी, चावल सरला चावल आनिबी, माने मते बार बार जीवाको पड़ियो। तो एटा होची कहार काम इंटरप्रेटर काम। कंपाइलर काम कोन ना कंपाइलर काम कोन होची मु मासक पय एका थरे नै आसे जहा सरीबो सेउडो यूज हो। बुझिला कि नहीं जदि हम एतको सिंपल भाषा रे बुझिबा तो एटा होची कंपाइलर और इंटरप्रेटर रे काम। बुझिला तो प्रोग्रामिंग हिसाब रे हमें कहबानी कोटा गुड कोटा बैड किंतु जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अछि जेंदि पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करूची, जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ यूज करूची। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन हिसाब रे समस्त सब लैंग्वेज यूज करंती। बुझिला लेखा A compiler is a program that take the complete program as a single unit. एका बेले के सब प्रोग्राम नबा as a single unit ताको प्रोसेस करिवो। किंतु इंटरप्रेटर कोन करिवो the interpreter is a different from the compiler. It takes the source program and translate it one by one. ये एका बेले के नेके ट्रांसलेट करिवो, ये one by one नेके ट्रांसलेट करिवो। एला प्रथम डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कोन कहूची compiler is comparatively faster in order to the overall execution of the source code. However, it takes the large amount of time to analyze and compare. माने जेहेतु सब जगह एकाठी नबो एनालिसिस पे टाइम नबो आ किंतु जते बेले वन्स एनालिसिस करि गला वन्स थरे कंपाइलेशन हे गला परे तमे ताको प्रोग्राम टाको बार बार कंपाइलेशन करिवो जे फास्टर रिजल्ट दबो। किंतु आज कंपेयर टू द कंपाइलर इंटरप्रेटर इज स्लो कारण तमे जते थरा जीवो से प्रथम गोटे 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 करिके मूल मूल ट्रांसलेट करिवो। नेक्स्ट होची व्हेन द कंपाइलर कंप्लीट द स्कैनिंग the whole program, then it generate the error message as the error can be found in any statement of the program. Compiler सब प्रोग्राम को नेके एग्जामिन करे तापर से देखाए को लाइन रे एका थरे एरर आसीबो। 41 43 46 लाइन रे एरर आसीला तेनो से एरर गुडा शो करिवो। किंतु इंटरप्रेटर कोन करिवो जोठी तारा एरर वाला सेठी स्टॉप हे जो से आवा बुझिबोन। बुझला so when an interpreter until the error is made it continue converting the program, therefore the debugging is easier. So when you want to run the program, a translator program is needed each time to convert the source code. Source code टाको जते बळे हमें convert करिवा 01 फॉर्मेट को तो सब समय ट्रांसलेटर दरकार। When you want to run a program, translator program is not needed each time to convert the source code. ना इंटरप्रेटर निजे ताको कन्वर्ट करिवो। It store the object code is more beneficial of the commercial purposes. से ऑब्जेक्ट कोड टाको नेबी मोर सोर्स कोड ता द्वारा डिलीट हे गला मो पाखरे ऑब्जेक्ट कोड अछि से ऑब्जेक्ट कोड को नेबी जो जगह रे चाहिबी मो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ताको यूज करि परिबी।
It doesn't hold the object code at it more beneficial for learning purpose. कौन कौन कंपाइलर अच्छी सी सी प्लस प्लस जावा फोटान ये सब कंपाइलर यूज करिवो पाइथन पर लिस्प एपीएल देन प्रोलॉग इंटरप्रेटर ये सब एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटर देखा डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर देखो लिंकर mainly all the program written using library function हमें जेतरा प्रोग्राम देखिबा म्हणजे सब लैंग्वेज रो पूरा ग्रामर अछि जदि हमें जेतरा कोन प्रोग्राम लिखुछे सब प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करिया पाए तार किछि लाइब्रेरी फंक्शन जबकि कि स्क्रीन में जदि तुम किछि डिस्प्ले करबा चाहौ सी प्रोग्रामिंग में से यूज होछि प्रिंटर जावा प्रोग्रामिंग में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर पाइथन में लिखुछि प्रिंट तो समस्त का लाइब्रेरी फंक्शन सब अलग अलग रहउछि so these library functions are pre-compiled they are already compiled like रहउछि and object code of this library file store with the .li तार जो object code हमें बनेगा सेटा कोड स्टोर हुए .lib और .a extension so main working of the linker is to combine the object code of the library file with the object code of our program माने हमें जो प्रोग्राम देखिबा आउ जो प्रोग्राम गुडा को ऑलरेडी कंपाइल हेकि अछि से दीटा को से लिंक करे के लिंकर करे ताले हमें हम प्रोग्राम का आउटपुट पाइबा so therefore we control that the job of the linker is to link the object code of a program with the object code of a library file of other file the output of the linker is a executable file हमें जब प्रोग्राम रन करते जो exe फाइल का जो आउटपुट का पाउचे सेटा है executable file the name of the executable file is the same as the source file but different only the extension माने हमें प्रोग्राम ना दे abc की my program ना दे तो मु जावा रे प्रोग्राम लिखुची से प्रोग्राम ना हला my program डॉट जावा और जेतेबे कंपाइलेशन नहीं होची से वो होची my program डॉट exe बुझला तो एबले माने फाइल डाटा सेम रहइबो ये तो तारा एक्सटेंशन का अलग अलग रहइबो देखो लिंक कर